Students, optics is the branch of physics which deals with the study of light and the phenomenon associated with it. Okay, correct. Student, actually light has dual nature. Light has dual nature. That means sometimes light is treated as particle, sometimes light is treated as a wave. Means sometimes the energy is transferred. You know, packet of energy is known as photon. Yes or no? A ray is incident. That means certain particles having certain energy are going and striking to a surface and coming back. Yes or no? That means light has dual nature. Sometimes in some phenomena, light is treated as wave, and some phenomenon light is treated as particle. If the light is treated as a particle, okay, then that part, then optics is subdivided into geometrical optics, and that is also known as ray optics, and another one is physical optics. Okay? So the study of optics on the basis of the nature of light, we can say, and the different phenomenon, optics can be divided into, students, geometrical optics, and another one is physical optics. Correct. Geometrical optics means based on the rectilinear propagation of light. When light is traveling in a um, form of energy and it is traveling in a straight line, yes or no, and in which uh, this is only valid if the size of the obstacle or the opening is much larger than the wavelength of the light. Yes or no? We'll see that in case of physical optics, what is the difference between wave optics and ray optics. Yes or no? When geometrical optics means it is light is treated as light की जो particle nature है, लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है. So that is known as what? Ray optics also, or geometrical optics. Geometrical optics is known as ray optics. Here we'll study about different phenomena like reflection, refraction, ठीक है, dispersion, and physical optics क्या है students? Physical optics is broadly again classified into wave optics, correct, and quantum optics. Wave optics and quantum optics, correct. Student, wave optics means what? Light is treated as the wave nature. You know, sound is a wave, correct, and uh, the light energy is propagated as a wave motion. और इसमें क्या क्या फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे हम? इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे पूरा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म होने के बाद. और इस पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्वांटम ऑप्टिक्स तो नहीं है कोर्स में, इट्स नॉट इन कोर्स, ठीक है. Quantum optics matlab light is treated as the particles called photon. The concept of photon is very much important in the study of origin of spectra, photoelectric effect, radiation, pressure, etc. In modern physics, some part is there, but most probably we'll focus in the first part, that is geometrical optics, and in the second part, that is wave optics. Correct? Yes or no? And as per your NCERT syllabus, in what we'll learn in ray optics, reflection of light by spherical mirror. Okay? We'll know the reflection phenomenon that you have studied in your early 10th standard. Yes, sir. Reflection of light, that is by spherical mirrors. Concave, convex, and plane mirror. Everything, all the parts, all the related phenomenon. Okay, we'll discuss. Then we'll also read in diffraction. Okay. Then, student, there is also total internal reflection concept is there. Total internal reflection concept. Okay. Refraction at spherical surfaces by lens, मतलब glass slab, ठीक है, real depth, apparent depth, there are so many concepts. Refraction at spherical surfaces and by lens, ठीक है, then refraction by spherical surface and through lens also. Refraction through prism also, we'll also learn about prism. Refraction through prism, ठीक है. Dispersion by prism, ठीक है. Dispersion is also a phenomenon, you know, splitting of white light into 7 colors. सब नेचुरल फेनोमेनन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ड्यू टू सनलाइट के बारे में जो आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब के बारे में. और लास्ट ऑफ दिस रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. ठीक है. स्लोली विल सी कि हाउ यू आर प्रोसीडिंग सिलेबस, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डील करेंगे. ठीक है.
will deal with optical instruments. Correct. So now, means geometrical optics or ray optics is what? It propagation of light in terms of rays. Yes or no? So we'll start with the first phenomenon, that is reflection of light. Give heading. We'll start with the lecture, reflection of light. Reflection of light. Give heading, reflection of light. Student, reflection means what? When a light ray strike the boundary of two media, such as air, glass, so part of the light is turned back into the same medium. It's called reflection of light. Yes or no? When we're taking any surface, it may be a plane, a smooth, shiny, curved surface. Yes or no? When the light rays strike, students, this was air. The light rays are coming from air, and this mirror is made up of glass. Take another medium. When it strikes to the media, it returns back. So some part of the light, students, actually when light falls, some part of the light is get absorbed, some part of the light gets reflected, and some of the lights goes into the medium, that is refraction. Yes or no? But now we'll deal with the concept of reflection of light only. Okay. So about reflection we can write, reflection is when light ray strikes, right? When light rays when light rays strike the boundary of when light rays strikes the boundary of two media, means two mediums, such as air and glass. For example, let's say air and glass. A part of light, a part of light is turned back into the same medium. Is turned back into the same medium. Correct. This is called reflection of light. This is called reflection of light. Correct. This is called reflection of light. Okay. So next, let's go to the next concept that you know, that is laws of reflection. Keep reading. Laws of reflection. Correct. You know laws of reflection. Okay. Let this is the reflecting surface. Yes or no? Let I incident a ray to this point. This is incident ray, and this is point of incidence. And let's draw a normal to this point of incidence. Correct. Let this is the normal. Okay. This is incident ray. And angle made by the incident ray with the normal is known as what? Angle of incidence. Angle of incidence. And this is reflected ray. Correct. This angle is known as angle of reflection. This is reflected ray. This is reflected ray, and this angle R is known as what? Angle of reflection. Correct. Student, what the laws of reflection says? The incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface. This means this is incident ray, this is reflected ray, and this is the normal. Yes or no? All lie in the same plane. So you can write the two laws of reflection. First is the incident ray, right? The incident ray, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface. And the normal to the surface. And the normal to the surface all lie in the same plane.
or lie in the same plane. Okay. And the second law is that the angle of incidence I is equal to the angle of reflection. Yes or no? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Correct? Hena? Yes or no? Student, you will study about one thing I am saying here after studying the vector. There is vector triple product, you know. There is scalar triple product and vector triple product. Yes or no? So this thing just remember for your convenient only. Yes or no? Student, let incident ray is traveling in one direction. That is incident ray. The direction is given. It's a vector. Let the normal is also vector. Normal is a vector also because it is having a direction. Okay. And the reflected rays are correct. This is I is incident ray, N is normal, and R is reflected ray. Okay. Student, the scalar triple product. You will study about it in vector when in maths also. Scalar triple product. Okay. The scalar triple product of incident ray, students, I, normal, and reflected ray is 0. Just remember some of the questions, you will get the concept. We will do that in examples. That means if R is there, angle of incidence dot normal, okay, is equal to, or let keep normal and I cross R, that will be equal to 0. Okay. If you can also say that if I'll take I to outside also, you can also write N dot R. This one you take cross, this one you take cross, this one you take cross. Okay. I cross N R dot N I cross R. Okay. I dot N cross R is equal to almost 0. Just remember this one. Okay. Just note it. Students, in the video lecture that I have said, I have told you something about angle of deviation. Yes or no? Told you something about angle of deviation, correct? This is the point of incidence. This is the incident ray. This is angle of incidence. This is normal, correct? The ray will go in this direction. This is reflected ray. This is R. Yes, sir. If the reflecting surface would have not been there, then the ray was supposed to go straight. Yes or no? It was supposed to go in a straight line, rectilinear propagation of light. You know, light travels in a straight line path. Due to the presence of this surface, the ray gets deviated. The ray gets deviated by this much angle. So ये इस पाथ पे जाने वाला था, बट मैंने यहाँ पर एक प्लेस किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसकी वजह से वो डेविएट होके जा रहा है. सो अपने जाने वाले पाथ में वो जितना डेविएट हुआ उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. वी से इज दैट एंगल ऑफ डेविएशन. Correct. That is known as angle of deviation. Getting or not? And students, you know the angle on a straight line is 180 degree. Na? Let this is D. The angle on a straight line is 180 degree. So D is equal to total angle is 180 on a straight line minus this is angle of incidence, this is angle of reflection, that is I plus R, correct? Yes or no? And you know I is equal to R, then I can write angle of deviation 180 is equal to 180 minus 2I or 180 minus 2R. 180 minus 2R, that is known as angle of deviation. Okay? Yes or no? Yes, sir. That is known as angle of deviation. And the student, the angle made by this incident ray with the plane surface, sometimes given in the question, that is known as glancing angle. That is also known as glancing angle, correct? That is known as glancing angle. Understood? And glancing angle G is always 90 minus I. Yes or no? And here, if I'm saying a ray is incident at 30 degree, let ये normal है और मैंने एक ray को 30 degree से incident करवाया, angle of incidence is 30 degree, then can you say how much will be the angle of deviation for this case? Simply you can say 180 minus 2I, that is 180 minus 2 into 30, that is 120 degree. कैसे हुआ?
कि ये रे इस तरह पाथ में जाने वाला था, करेक्ट, बट ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे जा रहा है. सो दिस इज 30 plus 30 60 and the total angle is 180, so this angle is going to be 120 degree. Got a little bit idea about angle of deviation? Just note it. So next, students, you know about normal incidence, right? Normal incidence. What is the meaning of normal incidence? Now a ray moving along a normal always retraces its path. इसका मतलब ये है कि if you are making with a, if the ray was making with an angle I with the normal, then it was also making an angle R with the normal. That is angle of incidence is equal to angle of reflection. But if the ray goes normally, ray is incident along the normal, then it will retrace the path. It will return back in the same direction. Yes or no? A ray moving along normal, right? A ray moving along normal always retraces its path. Always retraces its path. That means here you know how much angle the incident ray is making with normal 0 degree. Then it will also come in same direction. When I is equal to R is equal to 0 degree. And you see the ray was going in this direction and coming back in the same direction. So the angle of deviation is 180 degree. Na? And if you put D is equal to 180 minus 2I also, then I is equal to 0. Then angle of deviation is equal to 180 degree. So ये अपनी path को retrace कर रहा है. जिस मतलब path में गया था वो उसी path में वापस आ रहा है फिर. करेक्ट. ये प्लेन मिरर पे भी वैलिड होता है और ये देखेंगे हम कन्वेक्स हो या कनकेव मिरर हो जैसे भी हो. अगर मैं कन्वेक्स मिरर की भी बात करूं तो अगर मैं इसको इस तरह अलोंग द नॉर्मल अगर इंसिडेंट करता हूं मैं यहाँ पर तो इट विल आल्सो रिट्रेसेस द पाथ. ठीक है. दिस इज द नॉर्मल अगर हम लेते हैं तो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ रिट्रेसेस द पाथ. ठीक है. और नेक्स्ट अगर नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ग्रेजिंग इंसिडेंस. Next, there is another thing is right grazing incidence, right? Grazing incidence. Grazing incidence क्या होता है? Just see. So in case the light strikes the reflecting surface tangentially, मतलब जब हम spherical mirror के साथ डील करेंगे वो concave mirror हो या convex mirror हो, correct? तो जब कोई भी रे let any ray let that टेंजेंशियल अगर उसने पास किया इस तरह ये एक पार्ट ऑफ स्फीयर है तो टेंजेंशियल अगर उसने पास किया रे तो दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ठीक है. दिस इज द इंसिडेंट लाइट. लेट इस पॉइंट पे टच किया तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. लेट दिस इज द नॉर्मल. सो ये फिर उस तरह चला जाता है. सो दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट. यस और नो. टच करके जा रहा है. सो इन केस लाइट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंशियली देन उसी टाइम पे आई भी कितना होता है 90 डिग्री एंड आर इज आल्सो 90 डिग्री. आई एंड आर बोथ आर 90 डिग्री. करेक्ट. सो ये अपनी पाथ में चला गया कुछ डेविएट नहीं हुआ. ठीक है. अंडरस्टूड. जस्ट नोट द टू थिंग्स. स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट था नॉर्मल इंसिडेंस अलोंग रे मूविंग अलोंग द नॉर्मल ऑलवेज रिट्रेसेस इट्स पाथ. ठीक है. इसको भी स्टूडेंट्स कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली इट रिट्रेसेस इट्स होल पाथ. उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी. जस्ट नोट इट. लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. करेक्ट. So that means after number of reflection, after any number of reflection, after any number of reflections, if the ray of light, if ray of light is incident normally, it retraces its whole path. It retraces
its whole path. Correct. That is known as law of reversibility. ठीक है students, after that we'll go to types of reflection being based on the reflecting surface कि कौन सी surface से light reflect हो रहा है, उसके basis पे हम reflection को दो हिस्से में divide किए हैं. ठीक है, there are two types of reflection on that basis. अपनी अर्ली क्लासेस में भी आप इसको पढ़े हो स्कूल लेवल में. दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन and diffused reflection है ना. Number one is regular reflection, that is known as regular reflection, and number two is diffused reflection or irregular. Diffused reflection. Correct. Students, regular reflection क्या होता है? When a ray of light takes place from a perfect plane surface, yes or no, it's called regular reflection. लेट हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब आपने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए तो ये एक रेगुलर की तरह, मतलब यूनिफॉर्मली दे जस्ट गो ऑन. जस्ट अ मिनट. ये एक इंसिडेंट रे हुआ और ये भी ऐसे गया. ठीक है. So this type is known as regular reflecting surface. Yes or no? स्टूडेंट, यहाँ पर जो होता है ना रेगुलर रिफ्लेक्टर में जो होता है, लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है इन वन डायरेक्शन, एंड और एक डायरेक्शन पे उसका इंटेंसिटी मतलब ऐसा नहीं होता है कि नेग्लिजिबल होता है. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहता है या नहीं तो फिर मैक्सिमम रहता है. बट ये चीज नहीं होता है डिफ्यूज्ड में. देखते हैं चलो व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन नेक्स्ट. कि the reflection from the rough reflecting surface is called diffused reflection, और उसको भी रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. ठीक है. मानो कि ये एक रफ सरफेस है. ठीक है, मैंने यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया, ये लाइट ऐसे आया, यहाँ पर गिर के ऐसे जा सकता है. कोई भी लाइट अगर ऐसे मैंने इंसिडेंट किया, कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसे भी चला जा सकता है ना. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल इस तरफ हो सकता है, इसका नॉर्मल इस तरफ हो सकता है. सो दैट मीन्स द लाइट रेज आर नॉट इन ए sequential manner. ठीक है. And light is, students, in diffused reflection the light is not thrown back in well defined direction. जो reflection होता है ये एक well direction मतलब सही direction पे नहीं होता है, haphazard direction पे होते हैं. and और स्टूडेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एक मतलब क्या होता है उसी से कि हम एक बॉडी का जो इमेज है उसको हर एंगल से देख सकते हैं. दैट मीन्स द रिफ्लेक्शन दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, उसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज मीन्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट. एक रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, राइट, ऑब्जेक्ट is defined as point of intersection, is defined as point of intersection, is defined as point of intersection of incident rays. ठीक है. Students, अगर incident rays are diverging at a point of divergence, then the position of real object, that means मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया. ठीक है, I just took a mirror over here, और ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये इंसिडेंट साइड है, दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट साइड. ठीक है ना. तो ray is coming in this direction, so in this case the incident rays are diverging. इंसिडेंट रे यहाँ पर गिरने के बाद वो क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, और यहाँ पर भी क्या होते हैं, वो डाइवर्ज हो जाते हैं. एंड द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, जो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रहे हैं, इज द पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. इस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो जाते हैं रेस निकल के. ठीक है, जितने भी रेस, यहाँ से एक रे ऐसे गया तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे गया तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा. करेक्ट. बट स्टूडेंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसका एक एग्जांपल्स देता हूँ. वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये मतलब है
कि मान के चलो एक इंसिडेंट साइड ये वाला, एक रे यहाँ पर मैंने इंसिडेंट करवाया और एक रे मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, they will not go, they will get incident in this direction, it will get incident direction, but if I just retraces the path, अगर इस तरह होता है, so that is known as also virtual point object, मतलब वो नहीं होता है बट उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके ही नेक्स्ट एनालिसिस को आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम जब लेंस के साथ लेंस, लेंस के साथ मिरर, लेंस के साथ एक प्लेन सरफेस को जोड़ेंगे तो उस सारे केसेस पे थोड़ा इसकी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। स्टूडेंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन दिस केस द इंसिडेंट रेज, ठीक है, in this case the incident rays are converging and the point of convergence is the position of the virtual object। मानो कि पैरेलल से कोई रे आ रहा है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? उस साइड पे बनता है कभी कभी कन्वेक्स मिरर की, मतलब मिरर की उस साइड पे, या फिर कुछ अलग एक साइड पे और एक जगह पे जाके बनता है उसका, ठीक है। तो यू कैन से इन दिस केस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, यू कैन राइट इन दिस केस इंसिडेंट रेज, in this case incident rays are converging, incident rays are converging and point of convergence, and point of convergence is the position of virtual object, is the position of virtual object, correct? Just note it, get a brief idea about, let's get image, okay, right? Image, what is image students? After reflection or refracted, point of intersection जो होता है, right, it is defined as, it is defined as point of intersection, right, it is defined as, it is defined as point of intersection, it is defined as point of intersection of reflected rays in case of reflection। ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा रिफ्लेक्शन ही होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, in case of reflection और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो रेज जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, कभी कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे आर सपोज टू इंटरसेक्ट एट एनी अदर पॉइंट, यस और नो। तो उसी बेसिस पे इमेज को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक है रियल इमेज, करेक्ट। रियल इमेज क्या होता है? ड्यू टू द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, यस और नो। रियल इमेज इज ड्यू टू द रियल इंटरसेक्शन ऑफ, this is formed due to the real intersection of reflected or refracted rays, reflected or refracted rays, correct, that is known as real image। और सबसे इसका खासियत क्या है कि रियल इमेज जो होता है इट कैन बी obtained on the screen, ठीक है, it can be obtained in the screen, it can be obtained on the screen, correct। और ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, कैसा होता है ये? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना, करेक्ट। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? जस्ट नेक्स्ट राइट दिस, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? ड्यू टू द अपरेंट इंटरसेक्शन, अपरेंट इंटरसेक्शन का ये मतलब है, मान के चलो ये एक प्लेन मिरर है, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, एक रे ऐसे गया तो वो वापस ऐसे चला गया, ठीक है, एक पॉइंट रे ऐसे गया तो फिर वापस चला गया, दे आर नॉट सपोज टू मीट एट दिस पॉइंट, बट इफ दे विल बी एक्सटेंडेड बैक they are supposed to meet at this point, that is known as image, correct। and let this is the mirror, mirror, and यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, लाइक दैट, ठीक है, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे चला गया, फिर उसी तरह चला गया। अगर मैं इसको फिर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो उसका इमेज यहाँ पर बन सकता है। तो ये जो इमेज बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, वी से इट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? दिस इज फॉर्म, वी कैन राइट वर्चुअल इमेज, दिस इज फॉर्म, जस्ट राइट, this is formed due to apparent intersection, this is formed due to apparent intersection
apparent intersection of reflected or refracted rays of reflected or refracted rays. Or student, it cannot be obtained on the screen. It cannot be, it can't be obtained on the screen. Just write it. Next, let's go to the few basic things that you should know about terminologies about spherical mirror. Okay, giving spherical mirror. Correct. Students, spherical mirror is students, it's part of a sphere, correct? So let this is the center of curvature, center of the sphere, and let this part is silver. Yes or no? The part on which the light strikes and gets reflected, that part is known as what? Aperture. Yes or no? Students, spherical mirror कैसे form होता है? It is formed by the policing of one surface. Yes or no? Of a part of a sphere. Depending upon which part is shining and of the spherical mirror is classified. मैं कौन सी part को shining करवा रहा हूँ? अगर इस part को अगर shining करवा रहा हूँ, तो इसको कौन सी mirror कहते हैं? Concave mirror. Correct. We just say it as concave mirror. And if I'll be silvering this part, then this will be known as what? Convex mirror. Correct. ठीक है students? और effective diameter of the light reflecting area is known as what? Aperture. Yes or no? जितना ज्यादा aperture उतना ज्यादा एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और इमेज की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगा. मतलब मेरी कहने का मतलब है, मैं उसी स्पीड से मैंने एक छोटा सा सरफेस बनाया, ठीक है, एक बड़ा सा सरफेस बनाया, तो जो इमेज बनेगा किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा एरिया है. और ये जो है इसको जो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो कहते हैं, मतलब इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, उसको क्या कहते हैं? एपेरेचर. क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स? एपेरेचर कहते हैं. करेक्ट. और एपेरेचर जितना ज्यादा होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमेज, यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ, क्योंकि एक 4-5 रे मिलके मुझे एक इमेज बन रहा है, 10-20 रेज मिलके मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, तो ज्यादा लाइट आ रहा है ना, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ना उस पॉइंट का, और क्लियरली मुझे मिलेगा उसकी इमेज की जो क्वालिटी है. तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, you can write students, intensity of image is proportional to area and that is also proportional to aperture square. That is also known as aperture का square. Correct? Yes sir. इसको कहते हैं aperture. और थोड़ा बेसिक्स पार्ट बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट, मानो कि मैंने लिया यहाँ पर ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? पोल. मतलब द सेंट्रल पॉइंट which is most bulging. ठीक है, ये पूरा, ये सबसे ज्यादा बल्जिंग है. जब इस तरफ आप जाते हो तो बल्जिंग थोड़ा कम कम हो जाता है. ठीक है, इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. ये भी पोल है, ये पॉइंट भी पोल है. करेक्ट. दिस इज आल्सो पोल फॉर दिस मिरर, दिस इज आल्सो द पोल फॉर दिस मिरर. ठीक है, और ये तो आपको पता है क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. करेक्ट. और इसको क्या कहते हैं? So that is known as what? Radius of curvature. इसको क्या कहते हैं? पूरा लेंथ को क्या कहते हैं? Radius of curvature. Correct. That is known as radius of curvature. Yes or no? और ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. यस और नो? और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट है जहां पर सारे रेज आके मतलब कन्वर्ज होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस. क्या बोलते हैं उसको? फोकस. जस्ट रिकैप्चुलेट द थिंग्स, यू हैव ऑलरेडी रेड ऑल दोस थिंग्स इन योर हाई स्कूल फिजिक्स. Just before going to entering into the optics, I'm just trying to make you acquainted with the different terminologies of optics that we are going to use in the upcoming lectures. ठीक है? So this is known as focus. और ये फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हुआ फोकस, ये हुआ पोल, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ. क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. करेक्ट. और आपको पोल के बारे में पता चला, रेडियस कर्वेचर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, एपरेचर किसको कहते हैं, है कि नहीं?
ये सारे के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ। सर जो प्रिंसिपल एक्सिस टा उठे कौन था?